Assalamualaikum everyone, I'm Sami Bilal Khan. Let's talk about what to do when a child is having a temper tantrum or a meltdown because मुझे पता है कि उस सिचुएशन में पेरेंट्स को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करें. The first thing that you need to know कि करेक्ट ब्रेन साइंस आखिर है क्या. जब बच्चे को मेल्टडाउन हो रहा होता है या फिर वो टेम्पर टैंट्रम थ्रो कर रहा होता है तो आपको कौन से ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे उनका ब्रेन बिल्कुल काम डाउन हो जाएगा. पहली चीज़ जो आपको करना है वो ये है कि यू हैव टू बेंड डाउन ऑन देयर लेवल. सो इफ़ यू आर स्टैंडिंग अप, प्लीज़ बेंड डाउन, गेट ऑन देयर लेवल so that the amygdala in the brain, the alarm system in the brain or the emotional brain calms them down. बिकॉज जब बच्चा रो रहा होता है या टैंट्रम थ्रो कर रहा होता है, दे आर इन द फाइट और फ्लाइट mode where they are not feeling safe. So the brain has to feel it so that the child starts to calm down. Second thing that you will do is that you will touch them lovingly or hug them or move in a rhythmic motion so that their vagus nerve is activated, which is responsible to calm us down when we're anxious. Third thing that you will do is that you will name the feeling that they're going through in that moment correctly. So if they're feeling sad, you can say, I can see that you're sad. अगर उनको गुस्सा आ रहा है तो आप ये बहुत आराम से कह सकते हैं कि मुझे नज़र आ रहा है कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है. इससे होगा ये कि their brain or their mind will tell them that the other person in front of them can understand what they're going through, and they will calm down because they will feel understood and they will be connected to you. So these are the three things that you can do to help your child when they're having a temper tantrum or a meltdown, and you will be in control of the situation, hopefully. Thank you.